रियल लाइफ एंड रियल लाइफ दोनों काफी अलग है ना. बट गाइज आज मैं लेकर आया हूं वो 5 बॉलीवुड मूवीज दैट आर अ मस्ट वॉच फॉर एवरी लॉ स्टूडेंट, फॉर एवरी लॉयर, फॉर एवरी लॉ एस्पिरेंट एंड यस फॉर एवरी लॉ एंथुसियास्ट, because these movies are inspired from real life incidents. So the first movie is Section 375. Section 375 एक ऐसी मूवी है जिसमें आपको अपनी आई ब्लिंक करने का, आंख झपकाने का भी मन नहीं करेगा. There is a dialogue in this movie that we are in the business of law, not in the business of justice. And yes, this movie is a classic example of how the criminal justice system works in India. So Section 375 is the first movie in my list. The second movie is the famous comedy drama movie Jolly LLB 2. Jolly LLB 2 में सौरभ शुक्ला as the judge and Akshay Kumar as lawyers are fantastic and they leaves a great impact upon us. And this movie shows us that how a lawyer can make a big difference in the justice delivery mechanism. The third movie is Court Martial. कोर्ट मार्शल 2020 में एक मूवी रिलीज हुई थी एंड दिस मूवी स्टार्ट्स विद द कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स एंड एंड विद द पोएटिक जस्टिस इन दैट कोर्ट मार्शल ओनली. यस गाइस, दिस मूवी इज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ पोएटिक जस्टिस. और इस मूवी में जैक ऑफिसर, जज एडवोकेट जनरल का रोल करते हैं राजीव खंडेवाल एंड ही इज जस्ट ऑसम इन दैट रोल. Jack is the only opening for law graduates in the Indian Army and he shows that how a JAG officer can bring justice to the deprived subordinates or army men who is charged for murdering, for killing his subordinate, his senior army officer. Yes, so Court Martial is a movie which should not be missed by any law student. And then the fourth movie is Pink. Pink movie में is starred by Amitabh Bachchan, सदी के महानायक. And yes, this movie is a remake of a South Indian blockbuster movie. In this movie, you can witness the actual art of cross examination. Yes, cross examination is something which makes a lawyer a great lawyer. Yes. Mr. Ram Jethmalani and all the famous lawyers of the nation, they have said that the biggest thing that a lawyer should know is the art of cross examination, जो आप पिंक मूवी से बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिकली सीख सकते हैं. एंड द फिफ्थ मूवी इज शाहिद. Yes, this movie revolves around the highly inspiring life of Shahid Azmi. शाहिद आज़मी एक ऐसे लॉयर थे जिनसे हम सभी को एज अ लॉ स्टूडेंट हु आर गोइंग टू बी फ्यूचर लॉयर्स और लॉ प्रोफेशनल्स उनसे सीखना चाहिए. शाहिद आज़मी एट द एज ऑफ 15 ईयर्स उनको पहली बार वायलेंस के लिए बुक किया गया था एंड ही स्पेंट 7 ईयर्स इन जेल में रहते हुए उन्होंने लॉ की डिग्री he pursued his studies and law की degree acquire की. And after that he fought cases for those people who were framed in the crimes of terrorism. Later on, at the age of just in his 30s, he was killed. But Shahid Azmi की highly inspiring life से ये movie Shahid is something which you should not miss. So these are the 5 movies that are a must watch for all of you. Comment that आपने इनमें से कितनी movies देखी और आपका क्या review है इन movies के लिए. And if you have not seen any of these 5 movies, then go and watch all of them.